संबल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बात। मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने के निर्देश। सील बंद लिफाफे में होगी सर्वे रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद संबल के शाही जामा मस्जिद के विवाद को देखते हुए आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लेते हुए कहा कि संबल के शाही जामा मस्जिद से जुड़े मामले में फिलहाल निचली अदालत कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस पर रोक लगा दी है। साथ ही मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने को कहा। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट को दाखिल करने पर रोक की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश के जनपद संबल की शाही जामा मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम सुनवाई की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निचली अदालत में हो रही कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। इस मामले में निचली अदालत तब तक कार्रवाई नहीं करेगी जब तक मस्जिद के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका हाईकोर्ट में लिस्टेड नहीं हो जाती। बता दें कि संबल शाही जामा मस्जिद कमेटी ने निचली अदालत के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी शाही जामा मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने को कहा। साथ ही हाई कोर्ट को यह भी आदेश दिया है कि वो मस्जिद कमेटी की याचिका की लिस्टिंग 3 वर्किंग डेज में पूरा करें। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच ने सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में रखने का आदेश दिया है। साथ ही अब सर्वे रिपोर्ट भी नहीं खुलेगी। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया, ब्यूरो, नई दिल्ली। आज हमने मस्जिद की तरफ से अपीयरेंस दी और उसमें नकलें मांगी वादी पक्ष से। उन्होंने हमें नकलें देने के लिए आदेशित कर दिया। न्यायालय ने 8 जनवरी मुकर्रर कर दिया। आज क्या सर सर्वे की रिपोर्ट भी पेश? सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं, दरखास्त दी उन्होंने कि टाइम दे दिया जाए और उस पर हमने आपत्ति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दोबारा से नहीं कोई सर्वे नहीं। Today the matter was listed before the Honorable Supreme Court pertaining to the Sambhal issue. The concerned mosque committee had approached the Honorable Supreme Court challenging the order of Civil Judge Senior Division directly in the Supreme Court by way of an SLP under Article 136. The Honorable Supreme Court, after hearing both the sides, has passed an order directing the Masjid committee to approach the High Court and challenge the order of the Civil Judge Senior Division before the High Court. The Honorable Supreme Court has also directed the Advocate Commissioner to file his report in sealed cover. The Honorable Supreme Court has also expressed concerns with regard to peace and harmony to be maintained in the region. Vishnu, there was direct, argument by the Muslim side that, these kind of surveys that are being ordered should be stopped. What was the court's view? The court has said that we are expressing no opinion on the merits of the case. It is recorded in the order that we are not expressing any opinion on the merits of the case. You have the liberty to challenge this order before the High Court, and court has asked them to challenge this order before the High Court, and if the same is filed, it should be listed before the High Court within 3 working days. So what happens in the trial court? Is it stayed now? No, trial court proceedings are stayed as of now till the time matter is filed before the High Court, and the moment the matter is filed before the High Court will decide as to how the proceedings before the trial court will go on. आज हमने मस्जिद की तरफ से अपीयरेंस दी और उसमें नकलें मांगी वादी पक्ष से। उन्होंने हमें नकलें देने के लिए आदेशित कर दिया। न्यायालय ने 8 जनवरी मुकर्रर कर दिया। आज क्या सर सर्वे की रिपोर्ट भी पेश? सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं, दरखास्त दी उन्होंने कि टाइम दे दिया जाए और उस पर हमने आपत्ति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दोबारा से नहीं कोई सर्वे नहीं। Today the matter was listed before the Honorable Supreme Court pertaining to the Sambhal issue. The concerned mosque committee had approached the Honorable Supreme Court challenging the order of Civil Judge Senior Division directly in the Supreme Court by way of an SLP under Article 136. The Honorable Supreme Court, after hearing both the sides, has passed an order directing the Masjid committee to approach the High Court and challenge the order of the Civil Judge Senior Division before the High Court. The Honorable Supreme Court has also directed the Advocate Commissioner to file his report in sealed cover. The Honorable Supreme Court has also expressed concerns with regard to peace and harmony to be maintained in the region. Vishnu, there was direct, argument by the Muslim side that, these kind of surveys that are being ordered should be stopped. What was the court's view? The court has said that we are expressing no opinion on the merits of the case. It is recorded in the order that we are not expressing any opinion on the merits of the case. You have the liberty to challenge this order before the High Court, and court has asked them to challenge this order before the High Court, and if the same is filed, it should be listed before the High Court within 3 working days. So what happens in the trial court? Is it stayed now? No, trial court proceedings are stayed as of now till the time matter is filed before the High Court, and the moment the matter is filed before the High Court will decide as to how the proceedings before the trial court will go on. आज हमने मस्जिद की तरफ से अपीयरेंस दी और उसमें नकलें मांगी वादी पक्ष से। उन्होंने हमें नकलें देने के लिए आदेशित कर दिया। न्यायालय ने 8 जनवरी मुकर्रर कर दिया। आज क्या सर सर्वे की रिपोर्ट भी पेश? सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं, दरखास्त दी उन्होंने कि टाइम दे दिया जाए और उस पर हमने आपत्ति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दोबारा से नहीं कोई सर्वे नहीं।
ऐसा कोई नहीं। Today the matter was listed before the Honorable Supreme Court pertaining to the Sambhal issue. The concerned Mosque Committee had approached the Honorable Supreme Court challenging the order of Civil Judge Senior Division directly in the Supreme Court by way of an SLP under Article 136. The Honorable Supreme Court, after hearing both the sides, has passed an order directing the Masjid Committee to approach the High Court and challenge the order of the Civil Judge Senior Division before the High Court. The Honorable Supreme Court has also directed the Advocate Commissioner to file his report in sealed cover. The Honorable Supreme Court has also expressed concerns with regard to peace and harmony to be maintained in the region. Vishnu, there was direct, argument by the Muslim side that, these kind of surveys that are being ordered should be stopped. What was the court's The view? court has said that we are expressing no opinion on the merits of the case. It is recorded in the order that we are not expressing any opinion on the merits of the case. You have the liberty to challenge this order before the High Court, and court has asked them to challenge this order before the High Court, and if the same is filed, it should be listed before the High Court within 3 working days. So what happens in the trial court? Is it stayed now? No, trial court proceedings are stayed as of now till the time matter is filed before the High Court, and the moment the matter is filed before the High Court will decide as to how the proceedings before the trial court will go on.